ACP Pradyuman. A gentleman like him has been working for good 25 odd years for CID. I have to fill up his shoes, but you have to make sure that you bring your own uniqueness. It was trolled at the start, which is something I never got. I don't want to plan. Life has always happened in an unexpected way. लोगों को लगता है एक्टिंग बहुत easy है या सिर्फ आके बस कैमरा पे रहना है. The amount of maintenance that goes every day. मुझे लगता है मैं एक्टर ही नहीं हूँ. रुकना कहाँ है मुझे पता नहीं होता. My friends have been there with me. They are like, पार्थ इतना स्टैमिना आता कहाँ से तुझ में? I like to see people happy when I give them food and I want to. सही है ना? सही है. मजा है. जो उस इंसान को पसंद नहीं आया ना, जो मुझे अच्छी चीज लगी है, जो डिश जैसे अंदर से गुस्सा आता है और फिर मैं I'm like, तू फूड ही नहीं है ना? नहीं. तभी the world is unfortunately not happy seeing that. और इवन बहुत लोगों की नजर लगती है. इतना सब करने के बाद भी वो छोड़ के चली जाती है. इमेजिन. अरे वो जो दिल्ली वाला वर्ड है ना, BAKC. हालांकि गाने का नाम. एक सेकंड, सॉरी. What a धमाकेदार starting of an interview. I love it. ये आदमी में फुल एनर्जी है ना? रूठा मेरा इश्क गाने का नाम है जिसको हम डिस्कस करने आए हैं, लेकिन इनको देख के कौन रूठेगा भाई. मेरा तो दिन बन गया, मेरी साल बन गई. सुंदर लवली सेक्सी पीपल जो एक्चुअली इस वीडियो में काफी स्टीमी चीजें कर रहे हैं. बट बिफोर वी कम टू दोस पार्ट्स एंड बिकम चीजी पीपल, फर्स्ट सबसे पहले एक सेकंड वापस. पार्थ यार, ये क्या आयुष्मान बन के आपने कितनी अपनी आयु बढ़ा दी है इन द आईज ऑफ पीपल. यू हैव एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ CID and मुझे ऐसा लगता है कि कॉलर्स अप ऑल द वे इज हैपेंड. या एब्सोल्युटली. पहले तो आप क्या चबा रहे थे? पान था, क्या था मुंह में जब आप वहां थे? नहीं वो चाय थी. नहीं जब आप उस शो पे गए थे. उस शो पे क्या चबा रहे थे? ऐसे जब आप प्रोमो शॉट दे रहे थे तो च्युइंगम ही था. या दैट्स इट. अगर आपको लग रहा है वो है जो आपको लगता है वो नहीं है. बिल्कुल मुझे लगा पान वान है और कुछ नहीं था. नहीं. बेसिकली इट्स ऑब्वियसली CID ऑफिसर एक रिस्पांसिबिलिटी है कि मतलब ऐसा थोड़ी ना है यार कि आप उसको लाइटली ले सकते हो. तो यार आपने इतने शोज किए हैं, बट इस शो के तो अलग लेवल ऑफ यूनिवर्स और एब्सोल्युटली आउटर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल UFOs भी देख रहे हैं शो को. प्लीज एक्सप्लेन टू अस आपके घर वालों की एक्साइटमेंट. और आपके घर वालों की एक्साइटमेंट और आपके फैंस कैसे बढ़े इसके बाद. नहीं एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले कहा कि there was a time where I had this huge female audience, female fan following. But after watching this show, a lot of male fan following has been following me and I've got very good मतलब appreciation, DMs, messages और उनका बहुत सारा प्यार मिला. और मैं इनफैक्ट इतना खुश हो गया देखकर, मैं तो स्क्रीनशॉट्स लेकर मैंने अपनी माँ को भेजा, अपनी फैमिली को भेजा, ये दिखाने के लिए कि देखो अभी एक सॉर्ट ऑफ अलग सेट ऑफ ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है इस शो को. सो या हैट्स ऑफ. मतलब आई एम ग्लैड दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ सच अ शो and I'm enjoying it. And so called replace the gentleman जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है. यार to be honest it was trolled at the start and which is something I never got trolled for anything. But yes, filling in those shoes, I would not say replacement because it's not an easy word, because a gentleman like him has been working for good 25 odd years for CID, ACP Pradyuman. So agar I have to fill up his shoes, I have to make sure that there is some huge sense of responsibility and also you're ready to take down that sort of comparison which people will actually compare you with. But you have to make sure that you play your own ACP, your own character and you bring your own uniqueness. जैसे कि मुझे लोग पूछते हैं क्या तुम भी यही करोगे and all. So obviously that was ACP Pradyuman for them. That's why he's ACP Pradyuman. That's why people have loved him. What was that? हाँ दिव्या, मैं तुम्हें पूछूं, तुम भी यही पूछ रही थी. ये पता लगाओ. जितनी हॉट और सेक्सी दिखती है ना ये, उतनी क्यूट ही है ये जी. Excuse me, you know there was this when somebody had paid me this compliment. I thought कि अरे आप शादीशुदा नहीं लग रही हो, too cute to be married. I was like, what does that even mean? I think the same goes to you. Chalo, that's a good thing, nahin? Especially with us, that's a good thing, I feel. What has it been like post marriage? Has life changed कि आपको और भी प्यार मिला है? I think it's become even better because the entire focus right now is on work. Yeah. Because when that part of your life is sorted, you have someone at home where you don't have insecurities with each other, you don't have those kind of questions for each other. There's only the question is like, are you okay? Have you eaten? Is everything okay? How's work going? It's such a calm feeling घर पहुंचते ही. So I think that's beautiful and it has been more focused life now.
Yeah. और अच्छा काम कर सकती हूँ मैं. But आपके पति और हम फ्रेंड्स हैं और उनका उनको रेस्टोरेंट पूछना चाहिए आपको बहुत ये सेम जबरदस्त. क्वेश्चन आपको उनको पूछना चाहिए. नहीं वो तो you know like some men, very few men actually of his order are like ready to get married. He was ready, said he go to get married for a while. Wow. And it's so nice to see that kind of commitment from a man. Right, है ना? Nice. But if I had to ask you कि क्योंकि रेस्टोरेंट चलाते हैं भाई रोज ही टेस्टी खाना होता है और वो तो टेस्टिंग के लिए बिल्कुल दुनिया नहीं को होता है, बुलाते हैं. बिल्कुल नहीं होता. I think we both don't like to eat in restaurants. We both are very like he's a Maharashtrian, I'm a Punjabi. You know how Maharashtrian families are. They yeah. have like nice simple meals at थाली home. हाँ. And उससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें when you have the nice home. And especially I've seen in Maharashtrian cuisine ना the plate is divided in a very beautiful and nutritious way. अच्छा. हर चीज में like salads में बोलो तुम हर चीज में बोलो there's nutrients in every corner of the plate. Yeah. अच्छा. So I think after my marriage this is something that I've picked up. Being a Punjabi I'm like little bit slow on the butter paneer and all of that and Yeah. more over the pulses and all of these. It's more simple. More simpler. हाँ, yeah. कौन से नए नए डिशेस सीखे नाम वाम? सीखे ना खाना तो I love to cook. I love to You love to cook? I love to cook. Oh my god. And have you started cooking Maharashtrian food as I well? used to cook since a very long time, and like being a Bombay girl, Maharashtrian cuisine या Maharashtrian culture was my second culture in my life. अच्छा. The whole family. So varan bhat and amti and matki. Sawdi. I know, Usal. right? Oh, Oh. Oh, Maharashtrian, yeah, Yeah, you're obviously. Maharashtrian. But There the were way she times on was set. Yeah. There were times on set when I used to we just talk in Marathi हाँ. randomly. So that other people don't understand. Yeah. Yeah. Code language. Yeah. Bro code is happening in Marathi. I like Yeah, it. lots of fun, yes. आपको मराठी में एक लाइन में अगर बताना हो कि आप मराठी खाने से कितना प्यार करते हैं? I'll start मराठी with you. गाने से? खाने से. खाने खाने से मराठी the reason she said I think it's In very Marathi. apt. हाँ तर जे तिने बोललं आता की मराठी बद्दल मराठी जेवणाबद्दल की इट इज सो सिम्पल आणि खूप साधारण जेवण असतं आणि मस्त असतं आणि तेवढंच आपल्याला पौष्टिक असतं आपल्या शरीरासाठी तर ते मला सगळ्यात जास्त आवडतं. And your favorite dish? फेवरेट डिश हे मराठीमध्ये. सगळ्यात आवडती डिश माझी असणार मटकी. मला मटकी खूप आवडते ते पण मटकीची उसळ आणि मटकी मटकीची आणि उसळ. पोहे गरमागरम पोहे कांदे पोहे. कांदे पोहे हो पोहे, yes. हो हो तुमची बारी. माझी बारी मला कटाची आमटी खूप आवडते आणि ते बीन्सची प्रिपरेशन करतात कोकोनट घालून ती पण मला खूप आवडतात आणि पुरणपोळी आमटी ऑन फेस्टिवल्स मस्त. त्याचं दूध पण चांगलं वाटतं थंड दूध. वरण भात आणि मिरच्या Ooh. ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. आपकी सासू माँ कितनी खुश है कि बहू सासू कितना. माँ मेरी बहुत प्यारी. Nothing better than her. Nothing better than her. And when we when we are supposedly a very modern setup, हमको लगता है कि हम लोग तो बाहर काम करते हैं तो घर का काम नहीं करें. And she must be seeing कि आप उतने एक्साइटेड हैं किचन में जाने के लिए. तो कितने ब्लेसिंग्स मिलते होंगे. बहुत ज़्यादा. I think I'm very blessed. She's like even my mother tells me that I अगर मुझे भी ऐसा लगता है that she's the best mother I've ever seen. My mother also says that. It's very rare, but touch wood, it's nice. She's very humble. She's very nice, and it happens at times that वो मुझे अपने घर बुलाती हैं कि तू यहाँ आराम कर क्योंकि तू वहाँ पे हमेशा काम करती रहती. So here you chill. I'm here. I'll do everything. Both आई बाबा both. I'm just going to say thu at this Yeah, because please it's do that. South Indians do this. Please do नजर ना. that. Please do इसके that. इस लड़के की भी नजर उतारते हैं यार. पार्थ there's this beauty that just grows every year with you. आप उल्टे चल रहे हैं. हो इसलिए क्या मैंने रहा पूरा है? ब्लैक ही पहन लिया. No, नजर ना लगे. Yes. हमारे लिए भी हो गया ये. Yes. Parth, what's the scene with मतलब the trajectory of your life is कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, फिल्में भी हो गई. Is it like you're on are you feeling like you're on this very shift path? क्योंकि अभी ये म्यूजिक वीडियो भी बहुत अलग है. We'll come to it. Yeah. But where are you headed from here? कहाँ जा रहे हैं? The thing is, whatever has happened in my life has not happened because I wanted to happen in a certain direction. Life has always happened in an unexpected way. हाँ. So the Surprises. question, so coming back to your question, I don't want to plan. It's better and best that way because क्या होता है ना, expectations gives you a lot of कि होगा exactly. और फिर वो नहीं होता ना तो बहुत hurt हो जाता है. Painful rejection. हाँ. पर आपको upsets. याद हो कि लास्ट टाइम हम मिले थे Yeah. गणपति के फेस्टिवल में, Yes, if you yes, yes. remember, Yes. जिनकी Correct. फिल्म आपने की थी. Correct. तो मैं तभी भी आपको देख रही थी, आप में वो एक
you आस्था तो है ही, हाँ, विश्वास तो है ही, हाँ. but you're also a man of science. You started doing architecture, so at Yes. some level, I'm sure you have a certain logical way कि आप अपने career को आगे लेके जाते हैं. You know क्या है वो आपके लिए process? I should work out every day. मुझे रोज सोचना चाहिए. क्या है वो रोज? No, that process should be there in every whatever field that you are in, whatever profession that you're pursuing. That process is always there. कि you have to, for example, if you are into architecture, you have to go to the office. You have to be there, and religiously you have to follow the assignments. You have to submit the thesis, whatever you're supposed to submit. So similarly in acting, you have to go to, you have to do work on your fitness. That can be regarding dance or martial arts or gym. Gym जाना जरूरी है, बस body बनाना जरूरी है, ये सब नहीं है. Looking at me, you can see, you can figure it out. I'm not a builder or something. But yes, you have to make sure that your bodies are not aging, your face is not aging, and obviously the secret to that you asked me, what is the secret behind keeping yourself so fit? So yeah, I think keeping yourself fit is very important. Eating the right food is very important. And again, in this field, लोगों को लगता है एक्टिंग बहुत ईजी है या सिर्फ आके बस कैमरा पे रहना, बट द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस दैट गोज थ्रू आउट एवरी डे, दैट आपको इतने सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं कि आपको यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं खा सकते. आपको कितने एक्टर्स का आपने सुना होगा इंटरव्यूज में, आप 6-6 महीने वो लोग ब्रेड नहीं खाते या स्वीट्स नहीं खाते, वो लोग गिव अप कर देते. सो दैट इज नॉट ईजी. एंड प्लस to wake up on time, to sleep on time, to not go out and suppose, for example, party so much that get carried away. कि इधर भी चलो, looking at the limelight कि चलो यहाँ भी जाए, यहाँ भी जाए, यहाँ भी जाए. पर मना भी नहीं कर सकते हैं. Correct. Of course कर सकते हैं. अब तो हम नहीं आ सकते भाई. We can't come for your late ये night इतनी parties. बिंदास है. नहीं, लेट नाइट की नहीं, मैं इवेंट्स की बात कर रहा हूँ. Events. Okay, but some parties are in the evening, na? Yeah. Parties are in the evening, but yes, it all depends on whether you can. But see, I have my excuses, I have my shoot, I have everything, so I can like actually give a valid reason. So you have to come up with a valid reason, and you have to make them understand also. So basically in life you have to know when to exit and how to stop, say Correct, no correct. or when to get out. Correct. बहुत लोग कहते हैं कि जाते हुए अगर बाय बोला बहुत टाइम वेस्ट होता है, चले जाओ. आप बाय बोलते हो? आप बाय बोलते हो? हाँ, मैं बाय बोलता हूँ, बट मेरा अनफॉर्चुनेट पार्ट है फिर वो बाय मुझे जाने नहीं देता, फिर वो लोग मुझे जाने नहीं देते. मुझे ऐसा लगता है कि सुमड़ी में चले जाते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है. उसका आंसर वही है. Coming to you also, because I know I'm going to come to his fitness journey, क्योंकि I know it's mid-year, but still I think fitness is something that goes viral on videos. And I really ask this because बहुत सारे लोग struggle करते हैं body weight के साथ, you know, and touch wood आप लोग इतने healthy खा रहे हो, which is, I mean, home cooked food and stuff. Right. But like he said, bread मत खाओ, ये मत खाओ. क्या है दिव्या की list? See, I am a very, very foodie person. मुझसे खाना नहीं छूटता. मैं कमाती ही हूँ ताकि मैं अच्छा खा सकूँ. But that doesn't mean that I fill up my tummy like till here. मतलब मैं करता हूँ. कल ही किया. क्या खाया? सांस लेनी नहीं हो रही थी तब मैं रुक गया. पर खा मैं बहुत करता हूँ. खा क्या रहते हैं? So I am particularly I'm obsessed with this now again. You're not promoting something. हाँ, I'm not promoting, but no, I'm saying कि actors लोग बहुत ये सब give up करते हैं, but मैं on the other hand मुझे लगता है मैं actor ही नहीं हूँ क्योंकि मैं इतना खाता हूँ. So there's this wafer called Quadratini, and I'm obsessed with those. I know those bites. bites. If you keep eating now one, it will ask you more, one more, और करते करते मैं पूरा पैकेट खत्म कर देता हूँ. फिर दूसरा पैकेट हाथ में आता है, फिर एक, and this is while watching a series or while watching a film. So that is the most worst thing that anyone could. I think the worst thing that happens to me is कि खाना हो गया है, अभी IF चालू है, but we are watching OTT and somebody is eating. मुझे भी खाना है. ये होता है? Yeah. Especially Korean shows. Every other scene में they are eating. Restaurants में यार रेस्टोरेंट नहीं हुआ घर पे कुछ ना कुछ उनके चॉपस्टिक से मुंह में जाता रहता है. Sorry, shifting to you. I would love to know कि आपकी how do you stay away or does IF work with Divya? क्या करते हो? So that's what I said. हर चीज की लिमिट होती है. You eat it for the taste bud, not to fill the stomach. That's what I do. But ये usually नहीं होता है. If I have a project coming up where I have to look in a certain way, तो वो तैयारी होती है. 1.5 महीने की 1 महीने की तैयारी होती है, and then everything is sorted up. When I know I don't have to work for another 10 days, 20 days, तो फिर मैं आराम करती हूँ, खाती पीती हूँ, मजे करती हूँ, but I don't stop walking, I don't stop my dancing or my MMA. That keeps going on. MMA. Wow, that is a funny thing क्योंकि मुझे से लगता है कि a lot of us have jobs like us sitting, like जब हम रेडियो भी कर रहे होते हैं, we have to sit and talk because the mic is of a certain way nature, and a lot of people watching this शायद बैठे हैं on their computers, whatever they're doing, right? How do we stop? Because you guys are constantly on the move, and that helps क्योंकि movement से बहुत फर्क पड़ता है.
luckily I've done like 2 years of my corporate job life, but then also, and I don't think fitness is just for actors. It's for everyone. For Bilkul. everybody should get into it. And I feel it's all determination. Yeah, if you want to live longer, you do it. Like you do it. You get up in the morning, half an hour early. Utho tum half an hour, go for a brisk walk or a jog. That will actually help a lot of things. And the best thing Nice. I would what I do when I want to like drastically do something for my body is I stop eating after 6 o'clock. I Wow. swear, works like Yeah, magic. That's the magic. I swear that works. I leave sugar and I stop eating at around 6, and that really helps. मुझे इनकी एक स्टोरी बहुत पसंद आई कि बिकॉज ऋतिक इज माय फेवरेट एंड ही सेड वो जो ऋतिक का छोटा बचपन प्ले करते हैं वो मैं वो गोलू मोलू था 110 10 kgs. kgs. Yeah. Can we just clap to that, Divya? I know. To reaching 110? No, to becoming like you said, Hrithik Roshan. Explain. Oh my God. What part? Everything. Reaching 110 or? Part was struggle और प्लीज हिंदी में बताना, बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए. नहीं, बहुत एक अलग लेवल का स्ट्रगल था स्कूल में वेट को लेकर. लाइक द फनियर पार्ट वाज माय आई वुड से माय थाइज वर सो आई वुड से क्या बोलते हैं, बड़े मोटे थिक दैट इज टू रब अगेंस्ट ईच अदर. तो उसकी वजह से रैशेस होते थे. हाँ. तो मुझे याद है मैं यहाँ पर पैराशूट तेल लगाता था सो दैट दे शुडंट बी रबिंग ईच अदर. इतना वेट था. बट या ऑन द कॉन्ट्ररी आवर फैमिली वाज हेल्दी. सब मोटे थे, सब खाते पीते घर के थे. तो लगता था कि हमारी फैमिली है. तो मतलब किसी ने किसी को रोका ही नहीं कि. और मेरी एक सबसे और आज भी मेरी वो एक दिक्कत है कि रुकना कहाँ है मुझे पता नहीं होता. Yeah, like the chips thing that you Like just chips told thing, us. मुझे पता ही नहीं. So for example, even if like Divya says late night party, वो रुकना कहाँ है मुझे पता ही नहीं होता. Oh God. That just sounded a bit shady, but I will let that pass. Not shady. The way she said laugh at it. No, I'm telling because she's seen it. अच्छा, किसको जाना है, इसको जाना है, जाने का. My friends have been there with me Yes. post 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. So they are like, Parth, इतना स्टैमिना आता कहाँ से तुझ में? Yeah. So it is that. But ये है एक, अगर मैं न्यूमरोलॉजी करूं, we are of the same family. He's 2, she's 4, I'm 8, 4, and 2s are basically non-stop. They are basically आप रात को सो भी रहे हो ना तो आपका दिमाग चल ही रहा है. Correct. हाँ. So I think you can go if you have work. हाँ. आप बिना सोए Yeah, जा yeah, सकते हो. yeah. और आपका फिर भी वो So mind everything चल is extreme. Basically, everything is extreme. आप उसको एक चीज दो, वो एक में ऐसे घुस जाते हैं, फिर उसको दुनिया भूल जाते हैं. Now the whole problem over there is we are not able to balance Yeah. simultaneously. If we are into one thing, we are so much into it, we forget the other things. No, but you know, That's you the whole remind me issue. of Amir sir. उनकी पिक्चर भी रिलीज हुई हाँ है हाँ, तो Piscean है ना? Pisces हैं So आपकी मैं तरह. Piscean हूँ तो वो हाँ. वो भी बोलते हैं वो एक चीज में घुसते फिर वो निकाल निकालना, it's हाँ, like it's actually it's a condition if you say. Yeah. तो एक चीज जिससे आप बहुत obsessed रहे हैं when you were trying to lose weight as a kid, वो क्या था? Because वो obsession ही आपको यहाँ तक लाया है. हाँ, एक चीज जो मैं बहुत obsessed रहा था regarding to get rid of your weight. to get rid of it, everything. As in, I was obsessed with food. I could not, मतलब I used to eat a lot of food. I used to eat a lot of people's tiffins. Everything. मैं उनके टिफिन्स खाली कर देता था. मुझे शॉर्ट ब्रेक में भूख लगती थी, मुझे लंच ब्रेक में भी भूख लगती थी, मुझे ब्रेकफास्ट में भी भूख लगती थी. तो I used to eat like 5-6 times. So there was no end of it. कोई है टिप बच्चों के लिए जो देख रहे हैं, क्योंकि obesity is an issue nowadays. Obesity is an issue. Yes. Yeah, absolutely. So I think मेरे लिए what worked for me was working out at the right age. Not working out in terms of I used to do a lot of aerobics. There was no weight training. So I used to do, क्योंकि हमारे back then right now what we call as Zumba. तो मेरे लिए वो aerobics था. पिक्चरें देख के डांस नहीं करते थे? नहीं वो नहीं था. इंग्लिश गाने सुन के हम डांस करते थे. And give me a one, give me a 2, वैसा वाला types. And that helped. That helped. And actually, I think because so back, I'll tell you all the kids out there who are in their teenage period. Your metabolism is really high at that period. Yeah. So if you eat, lose it. you will put on a lot of weight. But if you lose simultaneously, you will lose a lot of weight. Yeah. So I would recommend if you work out in terms of if you start running, do cycling or swimming in that 14 to 18 का age gap ना, You can lose. trust me, your height will shoot up, you will lose a lot of weight, which happened with me. Yeah, 5 feet के they were 6'1" हो गए. हाँ, एकदम. तो मैं ऐसा था तो एकदम वैसा हो गया, थोड़ा लंबा हो गया. Now coming to this video, oh my God, क्या है ये chemistry और कैसे हुआ I इस know, साल? right? हम भी surprised थे. कैसे हुआ? Friends. Yeah.
इसके And- पहले की दोस्ती के बारे में बताइए. Yeah. And typically people have to break the ice, but here you knew each other. I'm Correct. assuming. हाँ. Correct. Tell us a bit about that, because it's sometimes because somebody's a friend, it could become awkward or it could be even more easier. I think it was even more fun because we understood each other pretty well. Yeah. And I don't think so मैंने किसी song में ऐसे intimate इतना closely we have, you know, I have not done that in a Yeah. song. Yeah. अब always web shows में तो उसके बिना तो होता ही नहीं है, पर songs में नहीं किया था, and this was the song which I did, and I think we were all having fun. मतलब हम मस्ती कर रहे थे, we were like murmuring something each to each other, we were making jokes, we were laughing. It was a good shoot, yeah. And Divya, knowing her, on the other hand, she's a very friendly person. Yeah. Everyone knows that. She's a very Full Chulbul Pandey. yeah, साफ दिल की है, clean-hearted girl, and good with her nature and her behavior and everything when it comes to shooting and all. So it was very easy. Very easy. Yeah. Okay, but if I Same had to as you. ask, okay, now both of you to be honest. Right. मुझे chemistry दोनों की बहुत सही लगी, but मुझे ऐसे लगा कि Parth, because his nature in the video was shown as the most sincere one, like Right. he's so excited to share with. Right. Somehow his romantic angle was coming out far more sincerely, and Right. yours was not Right. so much. हाँ. कि ये आपको Right. बोला गया था? So this character had a little bit of grey shade. People हाँ. kept guessing, is she in love or not? Is she हाँ. really into it or not? And हाँ. we had to make them believe कि ये सिर्फ मजे कर रही है या सच में ये प्यार कर तो रही क्या कर रही थी? हाँ. है? मैं तो मजे कर रही थी। देखा? मैं तो मजे कर रही तो ये था. थी। But in the end is when I think that's a beautiful shot when when we run towards each other and he's like holding me here, and I think that is a moment where we both look like we are in love and we look like यार अब लोगों को यकीन हुआ कि हाँ प्यार में. उससे पहले it was always confusing, and I think his part was so amazing. Beautifully मैंने इसको written. message किया वो कि हाँ, he did yeah. really well. हाँ. इतना सुंदर क्योंकि इसने पूरा किया. sketch देखने को मिला, पूरा, and action the भी देखने को story- मिला. The story was like completely on him, and the song is also actually like It's like a it was film. male It's like a side, film. film. हाँ, हाँ. And there were many scenes which were shot without me, obviously. इसके जो personal scenes थे, तो when the song came out, I was like, wow, they've been shot so well. हाँ. You know, he's देखो looking so particularly amazing. वो बहुत अच्छा लगा. When he wakes up in the morning and he doesn't see you, तो उसको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि आप निकल गए हो. हाँ. वो हाँ. ऐसे ही ढूंढ रहे हैं and सामने से Right. कुछ हुआ है क्या? I love that moment. मुझे वीडियो का वो moment इतना like इतना unassuming, इतना Yeah, प्यार में and then- पागल. Yeah, and then there's this face now, hard and लेके चली गई पैसे. You know, it's like I knew it. That laugh when he did that, I knew it. हाँ, वो that laughter And is then the dark. story- Actually, And yeah. then the story unfolds. I think it was good. रूठा मेरा इश्क. Yes. कब आपके पहले प्यार को आपने रूठे हुए मनाया है? क्या किया है भाई? हाँ यार, बहुत पहला वाला जो प्यार था, obviously, when you are, I was back then I was 17. हाँ. That is the time I had my first baby love, हाँ. you would say. और उसमें तो बहुत ही मतलब रूठते रहते हैं. वाहियात reasons Yeah, to we break up. think now. बताओ, किससे बात कर रही We थी? think it is so bad Oh. now. फोन की होल्ड पर है, वेटिंग पे क्यों है, किससे बात कर रही थी, क्या है, ट्रस्ट का busy इश्यूज, क्यों था? रात का बिजी क्यों था, फोन क्यों नहीं, कॉल बैक क्यों नहीं किया, घर मैंने पे 2 कब कॉल आया? किया, तुमने एक भी कॉल नहीं किया, घर पे कब आएगा? घर पे कब I know. Yeah, So, but yeah. people still do that. Huh? People still do that, I've yeah. seen like The 40-year-old people Really? also doing that. हाँ बाबा, Oh. हाँ बाबा, it's scary. It's आपके really केस scary. में बिल्कुल भी नहीं. दोनों को वैसा कोई स्ट्रेस नहीं है. नहीं, but this is नहीं, now. in your But past in your life. In my past, past life, I think I the was weirdest reason कि आपका प्यार रूठ गया आपसे. हाँ, बहुत बार हुआ weirdest होगा reason. तुम बॉम्बे के बाहर शूट क्यों नहीं करते? ये. अच्छा, हाँ. ओके. हाँ, तुम शूट करोगी तो सिर्फ बॉम्बे में. मतलब हाँ, मेरे बाप का प्रोडक्शन तो सिर्फ बॉम्बे में शूट करेगा. It's not possible. या So yeah. क्या वो many such इंसान instances. इंडस्ट्री के बाहर से था? हाँ. हाँ, तभी, That's क्योंकि why. दे डोंट अंडरस्टैंड देन हम्म. कि उनको लगता है कि एक्टर्स आर द वंस हु टेक द कॉल्स. But do you- That is also But Parth, that's a very interesting question. Yeah. क्या आपको लगता है कि अगर आप इंडस्ट्री के within वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है. हाँ, That's उसका what. आंसर हाँ. बहुत डिबेटेबल है. in a हाँ. sense कि do you feel then like how doctor marries a doctor, करेक्ट. तो अगर आपने इंडस्ट्री में शादी की तो उनको तो समझना चाहिए. हाँ हाँ, एब्सोल्युटली. और वो होता है. कोई तो बहुत भी नहीं, कोई तो ऐसे भी होते हैं. They have competition between Oh themselves. no, यार. that is not Oh. right. वो That भी is not होता right. है. You mean that I've Abhiman experienced story, that. बच्चन and हाँ, Jaji वो जी. भी होता है. नहीं, वो there have वाला been times वो when नहीं होना like you know कि कोई आके बोल रहा है कि यार मेरे को तो ये शो मिल गया, ऐसा हुआ, यहाँ तेरा तो सही चल रहा है, मेरा पता नहीं कब होगा. हाँ. And then you don't feel like you want to share the good news because honestly when you're in a relationship you want to share the best news that you have for Correct, yourself. With the closest person. Closest person. But ये industry के बाहर वाले अभी with Appu, I feel like he is just excited because he doesn't know only क्या चल रहा है. मेरे को ये शो अच्छा ये wow
this naya song, oh, you and Parth are very nice. Yeah, we met Parth that day. Na, हाँ. we met. नहीं, but on the contrary, मतलब you're also right, and somewhere you have to understand the other person also who's not happy. कि he's not competing with the other partner, he's competing with the world. तो उसमें ना अगर उसके पार्टनर अगर कुछ हो रहा है ना, तो ही इज नॉट थिंकिंग दैट कि मेरे पार्टनर के साथ हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है कि चलो इसका भी अच्छा हो रहा है, तो यार मेरा क्यों नहीं अच्छा हो रहा है. So I'm sure he or she, they don't want to be better than their partner, which is that they want themselves to be so supportive that they can support the other partner. और वो नहीं हो पा रहा है तो you're speaking of a very ideal situation, हाँ. or maybe not a very ideal situation हाँ. in the sense कि आप बहुत साफ सोच रहे हो, बहुत लोगों में Clear. होता है वो, Yeah. it's the male ego, you Correct, know, हाँ. कि how is it that I am not doing, I'm हाँ. just saying, I'm speaking for her. But he's not that man anyway. Yeah. So he will, like, I know that for a fact कि what happens here is it's not about कि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, खुद को बुरा लगता है कि यार इसको आके बताऊं कि नहीं बताऊं कि कुछ अच्छा काम ये आ भी रहा है, है. मैं बताऊं ये अपसेट हो जाएगा. और फिर Yeah. ऐसा, and I believe in this thing कि अगर कोई न्यूज में बताती हूँ अपने दोस्तों को, फैमिली को, तो everybody should be like, you know, wow, very nice, happy, and बस that's it, बात खत्म. उसके बाद कभी बात नहीं होगी, सीधा रिलीज पे बात होगी. भाई रूठा मेरा इश्क के बारे में बात करेंगे, क्विक रैपिड फायर कर रहे हैं. अच्छा, okay. Never have I ever forgotten my lines during a scene. हाँ, तो Never have I ever forgotten my lines during a scene. Yes or no? What? होता है यार. Well, you are doing lines every day. You have 10,000 lines every day. But you must be Rattu. Number 2s are very. हाँ, yeah. That way I'm very good. So I'm there like I would say 95%. मैं दूसरों की lines याद दिलाता हूँ. हाँ. तो हाँ. For me, if I don't stop, like अगर मैं अटकी नहीं तो अटकी नहीं, पर एक बार अगर वो अटक गई ना जो पॉइंट, वो फिर 15 मिनट तक वो लूप होता रहता है. Tongue twister. Still surprised कि ये क्या है, I can say it. And the minute the camera is on, it's not happening. जब off होता है तो बराबर आता है. Never have I ever done a film for money. I have. Good thing. Honest. I have done a lot of work for money. Avoided a fan in public. Avoided a fan in public. Yeah, I mean, if that fan Is going to. behaves inappropriately, जी. then yes, I do avoid. No, never. Oh, I mean, like, sweet. इसके fans में, so we know each other since I think more than 10 years now, and he used to stay in an apartment with his friends long back, and they all of us are still friends. जी. वहाँ से. How sweet. So there was one time I entered the house and there were glitters all over. ठीक है, hearts के glitters all over, and I asked him, "Man, ये क्या है?" कुछ नहीं, पात किसी फैन ने भेजा है. So he had that kind of mad following के घर तक आते थे लोग. So maybe he has to avoid people. नहीं, all this I consider very sweet. Yeah. But on the other hand, जैसे कि घर पता नहीं, वो वैसे घर नहीं भेजा है. हाँ. वो वैसे थ्रू मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो थोड़ा वैसे आए हैं. But फिर भी यार. और मुझे घर पे लाना पड़ता है तो obviously because हाँ. But yeah. हाँ, no. On the contrary, what I was trying to say is they act very. Yeah. कि they'll stalk you, they'll come behind you. And instead of that, I understand that they want to click a picture, so just come and ask. Yeah. But rather than that, they'll come close to you, they'll stand and they will secretly start shooting, or without even knowing. And then after 10 minutes, they'll come, can I click a picture? And I'll say no. अब आपको समझ में आया क्यों आपको नो मिला है? Directly आगे पूछ लो यार. I know, I understand, but it's okay. Come shoot ये वो पहले पूरी दुनिया को दिखा दे, देखो यहाँ पार्थ है. दिख रहे हाँ देखो. सुनो, Paul, you know they're doing it for likes and follows also. Dude, it's you. Never have I ever played a prank on set. I have. Oh, कौन सा? यार बहुत किया. कोई याद आ रहा है? भूत वाला तो बहुत करते हैं. दीदी डर गई. कसौटी के सेट पे बहुत किया हमने. अच्छा. या. और क्या? Even on कैसी है यार ये, I think Charlie was the one who used to play a lot of. वो उसमें आत्मा आ जाती थी. तो जो भी हम हॉन्टेड हाउस बर्डविड आइलैंड पे हम जब शूट करते थे, तो उसमें वो एक रूम में हम उसको बिठा देते थे अंधेरा करके, और फिर हम सब एक दूसरे को बोलते थे चार्ली को कुछ हो गया. और वो जाते थे और चार्ली फुल क्या हो गया पकड़ते थे. पीपल यूज्ड टू फ्रीक आउट. और उसके पीछे की खुराफाती दिमाग आपकी थी? नहीं, हम सबका कुछ नहीं है, चलो बोर हो रहा है शूटिंग पे कुछ करते हैं. नाइट शूट स्पेशली, नाइट शूट पे तो हम करते ही है. क्या अमेजिंग टाइम पास है इनके पास. वंडरफुल. यू? I've done only once and that was my prankster partner Tanuj Virwani. Of course. हमने काफी वैसे प्रैंक्स किए थे क्योंकि उस टाइम पे माहौल भी वैसा था. In web shows यार you do it like cut schedule. You don't have time to do all of this, but I would love to do it.
How cute. करना पड़ेगा. I would love to do it. do pranks. मुझे ये मौका नहीं मिला लेकिन मैं जरूर करूंगी. हाँ. I think she's going to consult him very soon. ऐसे मुझे लग रहा है. Never have I ever used my celeb status to skip a line. To skip a line. Or maybe No, to no, get no. tickets faster. Oh no. Oh, she's looking guilty. No, what I have done Airport is पे. what I have done is reaching the airport. हाँ. देखा? Usually not on time. वो जो लास्ट वाला जो 1 hour 55 minutes वो जो होता है ना कि गेट क्लोजेस, तो फिर मैं अपने चश्मे निकालता हूँ, टोपी निकालता हूँ, ये वो, और फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ. Yes. So that she recognizes me. And they'll be like, And sir, thankfully वो हो आपको जाता क्या है. चाहिए इस फ्लाइट के अलावा वो भी बस. बता ही दो. तो वो thankfully approve हो जाता है. Yeah, that works. What a charmer. Yeah, no. I've done it multiple times. मतलब ऐसे you know जैसे बोल रहा है कि so you just show up yourself. हाँ. The face is clear ना, बाल नहीं है, and the walking attitude changes. Yeah. तो They will look like a star. Calm down. इतना कुछ करने की जरूरत नहीं. So like I do People that will. हाव में. So वो अपने आप pick up हो जाता है. That's not intentional. I swear to God. It's a mode. कि Mode, please हाँ, मुझे बस. यार अंदर ले हाँ. लो. Okay, never have I ever lied about my relationship status, and this is more about रूठा मेरा इश्क as well. You know, क्योंकि relationships में बहुत होता है कि नहीं I'm not dating anyone क्योंकि आपको कोई नया पसंद आ रहा है या कुछ. नहीं, my reasons are other something else, but yes, I have done that. Oh. But I want to keep it, especially during the initial stage. जी. So when things are not, to protect the relationship, and even after a long time, to protect the relationship, because then recently you've been listening to a lot of this thing कि नजर बहुत लगती है, and when you're out there, you're showing it to the world and all. The world is unfortunately not happy seeing that. Yeah. जी. और even बहुत लोगों की नजर लगती है, और फिर आप देखते हो, I have seen my close friends and all, they've gotten engaged and now they are not together and she or he is with someone else. So and that engagement and all, they posted on social media, everything going viral and all. So यार क्योंकि नजर की बात की उन्होंने हाँ. कहा पूरा ब्लैक पहना है, कितनी बारी नजर बहुत, उतारती हैं बहुत, आपकी बहुत, मम्मी और बहुत. बहुत ज्यादा. या पैर में भी पहना एक धागा तो. You, Divya? Never ever lied about your relationship status? Oh no, she's been very I've open. been always very extra vocal. Yeah, I think it's Sagittarius की एक issue है ये. I'm sorry. So do you agree to what I said कि नजर लगती है हाँ, वैसा? तो सही बोल रहा है. हाँ. Never have ever stolen food in vanity vans from others. इसका तो मुझे लग रहा है yes आने वाला है. नहीं, मेरा खाना चोरी होता है. क्या? क्योंकि मैं बहुत ला के Times have रखता हूँ. changed. मैं बहुत ला के जहाँ रखता हूँ. डब्बे तुम खाते थे स्कूल में, अब times have changed. नहीं, अच्छा फिर- 11-12 नहीं, ऐसे. एक्चुअली मेरी आदत है बहुत खाना लाने की, जी. तो मेरे पास इतना है, एंड आई लाइक शेयरिंग. ऐसा नहीं Yeah. मैं प्रोटेक्टिव कि मेरा खाना ये मत लो, ये नो. आई दैट्स व्हाट like her also, I like to see people happy when I give them food, and I want to सही है ना, सही है ना, हाँ, मजा है अच्छा ना. So because I liked it, so I want the The joy joy. on their face, the smile on their face, That's and that sweet. is all priceless. That That's so emotion is very sweet. priceless. आप भी ऐसे हो? हाँ हाँ. आपका खाना? Food is the only way. Food brings people together. I feel. So well said. और जो उस इंसान को पसंद नहीं आया ना, जो मुझे अच्छी चीज लगी है, जो डिश, सपोज ये दाल फ्राई, और वो हाँ ठीक ही है, जैसे अंदर से गुस्सा आता है, और फिर मैं लाइक तू फूड ही नहीं है ना, नहीं, हाँ, तभी तेरे को खाना पसंद नहीं है ना, नहीं, तभी सही नहीं है. हाँ. Never have I ever laughed at a set in scene, like a serious scene, क्योंकि इसमें मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों के बीच में इसी में ही हो गया है. With me, though, it happened on CID, all like initial days. ओह, Yeah, बहुत it was a अच्छी serious थी. scene and like दया, like मैं sorry, yeah, sorry, always. बहुत बार. I've got a history of laughing at wrong moments every time. हाँ. I think now as a parting note, Roota Mera Ishq is something that's going to get so many people to feel that magic that we saw in music videos in the past, जहाँ पे ना एक storytelling हो रही है, हाँ. and it really engages you. Yeah, It yeah, really takes you into that world. Yes, yes. कोई ऐसा एक moment है from BTS, because we're all watching the videos still, Yeah, and yeah. it's a bit funny. You want to go back and watch the video. It's kind of Right. weird. Right. Why? Is there a BTS moment that you want to share with us which was memorable? आपके लिए अलग से बताइए. I think the car thing was Yeah, the car sitting thing in the Mini Cooper and Yeah. showing it to the world that we are enjoying our lives out there, but at the same time it was May ka mahina, Hot. or it was scorching hot It heat, was hot. and pasine ho rahe, and then we have to look fresh also, and we have to look happy. Yeah. Each other के and बाहों then, में. and then that was the first video we sticking Yeah. to each other. Sticking Like, to each never other. mind. Sweaty. There was this one BTS he shared, like song release होने से हाँ. पहले,
And there's this one thing I'm doing is मैं अपने आप को उठा रही हूँ because हाँ. I'm wearing shorts and the हाँ. seats are leather seats which have been like So it's hot. it's hot, okay. आप चिपक गए होंगे मैं चिपकी हूँ उसमें and I was like making solid sure गर्मी, चटके. मेरा फोन घर ही बना है ऐसे I was like this throughout the shoot हाँ. car shoot, but I think हम दोनों ने हंसते खेलते बहुत अच्छे से वो निकाल लिया. Yeah. और coming back to हमें वो बेसिकली दिखाना था कि वो गोवा है ना, हाँ. जबकि हम शूट कर रहे हैं वसई में. बस सही में shoot. So, yeah. एक चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आपका प्यार आपका इश्क आपसे ना रूठे. One tip that you'd like to give. एक चीज जो आपको नहीं करनी Yeah. चाहिए, take that person for granted. You shouldn't be taking that person for granted कि वो तो है ही अपनी जिंदगी में, कहाँ जा रही है वो. हमेशा I have seen most of it लड़कों के साथ होता है, Yeah. because they get busy with their work life, career, Well कि अब said. इसको सेट करना है, उसको सेट करना है. Well said. Yeah, for me it's almost the same, but being grateful for what you Yeah, have, who that's you so have. true. You know, हर बार ऐसा होता है क्योंकि नुक्स तो हर किसी में निकाल सकते हो, and there is no person on this planet जिसमें नुक्स नहीं होंगे या जिसमें Yeah. problems नहीं होंगे. You have to pass all of that and you understand the person and you have to really know the core of the person कि ये core में अच्छा इंसान है ना. तो what happens, whatever behavior happens, because बोलते हैं ना वो time बुरा होता है, इंसान बुरा नहीं होता. It's the same logic here. Okay, maybe there must be something that's going on. You'd rather try to understand that and don't become more problem for that person because they're already in a trouble. So you become the solace, you become the sukoon of that person on that moment. बाद में फिर जो भी है, we can sort it out. But communication is something. The key. Yeah. Lovely. I can keep talking to these guys, but I have to stop at some point. इतना सब करने के बाद भी वो छोड़ के चली जाती है. Imagine. अरे. वो जो दिल्ली वाला वर्ड है ना, BAKC. वाह, ये पहली बार कैमरा पे हो रहा है कि किसी ने गाली ना देते हुए ऑलमोस्ट बता दिया है. But we are very, very impressed with this camaraderie, this friendship, and this video. हाँ. I really feel इसमें बहुत nostalgic feels हैं. Yes. And it's going to start a new brigade of video making, and I'm really thankful Thank you. for that. Thank you. आप दोनों को गाना कितना पसंद आया? बिल्कुल बहुत पसंद आया, तभी तो हमने किया. No, but for you, like. नहीं, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट हम लोग को गाना जो जेन्युइनली सुनने में बहुत अच्छा लगा था. और यासिर ऑब्वियसली इज अ गुड सिंगर, फैबुलस सिंगर. तो व्हेन वी ऑब्वियसली वर शूटिंग विद राजू सर, इट वाज अ ट्रीट टू वर्क विद हिम ऑब्वियसली. एंड जैसे कि हमने कहा ना कि पूरे गाने में सब कुछ अक्यूमुलेट कर लिया उन्होंने, व्हिच वाज वेरी फैंटास्टिकली पुट. एंड वही डाउटफुल था कि इतना सब कुछ शूट कर लिया, कैसे डालोगे तुम वो 3-3.5 मिनट के गाने में. 2 दिन था ना. हाँ. 2 दिन हमने शूट. Yeah, so it was मतलब so much we shot, so much different You guys scenes. managed a lot in 2 days. Yeah, yeah. if you ask me. So many different looks. Yeah. And the lighting and everything. Lighting plus the. आप भाग रहे थे क्या in between shots? Fully. By the way, वसई में क्या है देखने लायक? हम भी जाते हैं. This is the Goa of Ruta मेरा इश्क. Imagine हमने वसई में कसिनो बनाया. कसिनो भी ढूंढ लिया. हमने कसिनो बनाया. So yeah. I think the place that you were hijacked to is quite nice. It must be one of those forts, पुराने fort. हाँ वही था वसई था. Right. Anyway, lovely chatting with both of you guys. Same here. You have great Thank you. energy, so pure and so loving. Thank you so And much. I hope ऐसे आप हमेशा रहें. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for having us. Cheers. Bye bye. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.